अगर तुम वुचो ये कचा वसान यमो पे फंब ये सतर वनान अम बड़े परेशान कर न बना दर त्रावन यल न बना दरवाज त्रावन यल ओतर त्र कथान कोविडन यम बासान खतर तो अल्लाह ताला गोस मेहरबान गसन अम बड़ परेशानी वसम न बना नबर नेरुन न बना बच्चे स्कूल कड़न नान बच्चे स्कूल योर असल पे और जुकाम हेत और कथा हेत मास्क पे लगाने मास्क अनान तह बना नबर नेरुन क्या गमत परेशान तिथे कन वसान सतर वनस वंद कालस मज इत शीन वसान बिल्कुल कहीं कर न कम न कहीं पे मास्क गन डबल डबल मास्क पे गन यह नकवारिम कि अचान किन अचान एकदम दिवान था बस छात दिवान गोड़े था अच्छा अम पे जुकाम ग खड़ा लकचन क्यों बढ़ बिल्कुल जानवरन तान ग अम छत खराब जुकाम खड़ा चूर गुपुड़ अगर हून अम सतर मज पक सह खराब ग सारे खुद करान चारवाइन इंसान हटिस बयान हटिस कर थाट अम स बोलता है कोरोना कोरोना नहीं, वो ये कोरोना पैदा हो रही है। कौन? दरख्त की कोरोना। जहाँ जाते हैं कोरोना आ रहे, कोरोना आ रहे। वो कहाँ कोरोना है? वो ये दरख्त कोरोना है। Behind me you can find a sort of jungle of these female poplar trees. These poplar trees are beautiful, and they say there is nothing straight here but poplar trees, but sometimes they become a nuisance for the public health. The pollen of these trees, which is being carried by small, very light, tufty, cotton-like substances, you can see that in my hand, it's here, and the scenario is like it is a sort of a snowy scene, a dry snow, lot of floating in this heavenly atmosphere. This spoils the fragrance and the ambience of this heaven. या आप देखेंगे कि बच्चे जो है आमतौर पर उनको उनके आंसू आते रहते हैं आंसुओं की वजह से, और वो जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपकी आंखें सुर्ख होती है और मुसलसल आपको आंसू आते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पोलन्स की वजह से है। और इसके अलावा भी फीवर कभी कभार बच्चों को हो जाता है, कभी कभार बच्चों को स्टमक इरिटेशंस हो जाती है, स्किन इरिटेशंस हो जाती है, और इन सब का रीजन जो है वो ये पॉपुलर पोलन्स है। The tufty substances, the pollen, the organic components in these pollen and their appendages, which are tufty, cotton-like and very light, they create allergy in the human body, and same is the situation. They create allergy in the animals also. The first important organ to get involved is the lungs. Lung allergy is one of the most important manifestations and problems caused by these pollens, and it is manifested in the form of breathlessness, dry cough, itching, and irritation of the nose, sometimes running nose, and conjunctivitis, because the eyes also get inflamed because of this. बहुत रात दिन तंग करती है ना ये। अगर थोड़ी सी हवा हो जाएगी पूरा हमको रोटी नहीं बनाने देगी, पानी नहीं पीने देगी। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी स्कूल की नहीं है, बल्कि एक जनरल प्रॉब्लम है जो पूरे कश्मीर में इस वक्त लोगों को फेस करनी पड़ती है। आप जाइए बच्चों के हॉस्पिटल में, आप देखिए उधर जीबी पंत हॉस्पिटल में, आपको अभी हजारों बच्चे, वहां पर सैकड़ों बच्चे दिखेंगे जिनको वो इन्फेक्शन होंगे, जिनको वो एलर्जीज होगी, जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पोलन्स की वजह से हो रही है, पॉपुलर पोलन्स की वजह से। This problem is because the female poplar trees, especially the Russian ones, they are more prone to produce this type of substance, and they are the main cause of allergy in this valley. Government has करे वारे लटे पीने न चटान यम फ्रास न के न तुलान पे कदम। हमने कई बार, आप देखिए जरा इस वक्त भी कितने हवा में तैर रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में ये पोलन्स। हमने कई बार यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी जो है उनसे ये गुजारिश की कि यहाँ पर जो महकमे इरिगेशन के जो ये सफेदों के दरख्त है, ये पॉपुलर ट्रीज है, उनको एक बार काट दिया जाए, ताकि उनको हुक्म सादर किया जाए कि वो इनको काटे, ताकि यहाँ पर बच्चों का पढ़ना, बच्चों का आना, बच्चों का बैठना इस मौसम में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सरकार अगर चाहती है कि हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत और दूसरे लोगों की सेहत सही रहे, तो ये जरूरी है
कि ऐसे सफेदों को, ऐसे पॉपुलर्स को काट दिया जाए जो इन पोलन्स का सबब बन रहे हैं, जो इन पोलन्स का रीजन बन रहे हैं। इससे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट पर है, और इन जगहों पर वो दरख्त लगाए जाए जो हानिकारक ना हो, जो सेहत के मुखालिफ ना हो, जो जिनके हेल्थ हैजार्ड्स ना हो, जो इंसान की सेहत को, इंसान के माहौल को, इंसान के नेचर को जला बख्शे। The control measures continue to be worked out, and one of the most important control measures is specific protection. Specific protection is that whenever you inhale air in these areas, you have to use a mask or some cover cloth where through you inhale, you take the breath and stop these substances from going into your body or into your eyes. So specific protection is one of the important and immediate measures that can be taken recourse to. But long-term measure is to stop the nuisance, the production of this nuisance by genetic engineering of the plants, replacing this particular brand of poplar trees by the ones which are harmless, which don't produce this nuisance, by means of consultations with the experts who are botanists or experts in plant. Plantations of the poplar. This poplar deltoides, it's locally called in Kashmiri, it's called a fluff. So this is the male cultivar. Here in the Kashmir, we are having a problem that mostly female cultivars were growing in the Kashmir Valley. So there was a cotton menace that due to absence of the male, there was no pollination. So it was the unfertilized seed which was shedding their which was shedding in the spring months. So it was leading to the irritation in the eyes, in the throat, running nose, so on, so on. So university took an effort. We came with a solution. We brought some cuttings of the male poplars from the Vimco and transplanted, raised them in the nursery. After completion of field evaluation, nursery evaluation, we transplanted them here in the March 2020. Immediate treatment is to take some allergic measures, anti-allergic drugs. They can help you to curb down the problem, but better is to prevent it, not to get exposed to these substances. And one more important thing, children, the females, other people, as far as it's possible, don't expose your body unnecessarily to these allergens. Try to avoid these allergens as far as possible. But whenever it is necessary that you have to pass through this area where these allergens are suspended or dispersed in the air, you take specific protective measures which consist of mask or use of cloth for your nose and face covers are to be used so that you can get rid of them. There are different technologies which have been given by the scientists of our valley, of the researchers. For example, if there is abundance of the female population, we can go for the replacement of them by the male ones. Not only, we can go for the branch cutting, we can remove the branch up to 70%, and or we can replace them by the hybrid varieties. There will become then pollination as these trees come into bearing or come into flowering after 9 to 10 years. So those trees which are mature, fully female trees which are mature, they should be cut down, and in those places they should be replaced by the male ones. That's important, and the awareness about this should be brought to all groups of population by awareness generation programs. You can switch over to the social media or internet for better generation, or you can go to the nearest health institution for getting better information about the problems created by these and cooperate with the authorities to curb down this problem.